सेकंड सम जो दिया था एक्सप्लेन करता हूं. We have now sums based on section formula, but two concepts we will use. देख लेना कौन से concept use करेंगे. Section formula. First of all, we have a point of trisection. समझ लेना. Points of trisection. Points of trisection means what? A line segment is given, and that line segment is divided in three parts. For example, we have one line segment here. We want to divide it in three parts. Now this is line segment. यहां देखना, ध्यान यही होना चाहिए, आपकी बुक में नहीं देखने. For example, line segment is AB. On line segment AB, 2 points are there, P and Q. 2 points P and Q divide AB in 3 parts. है ना, 3 पार्ट बन गए. देखो कौन से? The first part we can take is AB. Second part is PQ. Third is QB. So line segment is divided in 3 equal parts, right? These are the points A, P, Q और B. 4 पॉइंट है, बट बीच में 2 आए, 3 इक्वल पार्ट बने. Now whenever we have point of trisection, we get the ratio. रेशियो दिया नहीं होगा, बट हम निकालेंगे रेशियो. कैसे? Like this portion AP, another is PB. राइट, मैंने जो ड्रॉ किया मेरा स्केल था, उस हिसाब से इसकी लेंथ है ट्राइस सेक्शन की 21 यूनिट्स. 21 यूनिट के मैंने 3 इक्वल पार्ट बनाए, तो एक एक पार्ट कितना होगा? 7 का. 7 3 जा 21. मीन्स अगर AP 7 है तो PB उसका डबल है 14. गॉट इट? AP अगर 7 है तो PB डबल है. Means whenever you have point of trisection, suppose this ratio is 1, इसकी कंपेयर में ये डबल हो जाएगा 2. So indirectly क्या है? रेशियो दिया है ट्राइसेक्शन में. We take m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2. बस. So now we will use section formula. Point P coordinates are xy, point A coordinates are x1 y1, point B coordinates are x2 y2. Okay. So P point we can get by section formula. अब P पे section हो जाए, इसके बाद रहेगा Q, तो Q will be the midpoint of PB, है ना? Now forget this AP, तो PB रह गया. तो PB में Q आएगा midpoint. So Q can be obtained using midpoint formula. ठीक है? पहला आएगा section formula से, दूसरा आएगा midpoint formula से. So we can get PXY. कैसे निकालेंगे? By section formula. And after that we will find Q point. Q के coordinates हम लेंगे x dash y dash. So we can say Q x dash y dash. This is midpoint of segment PB. का midpoint हो जाएगा. Correct? So ये थी सेक्शन फॉर्मूला. डू वन थिंग, लिखो कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन फॉर्मूला. हम सम्स करेंगे ट्राई सेक्शन. सो पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन.
एतराज पंड्या है कि नहीं? तो उल्टा क्यों दिखता है मुझे? हाँ हो गया, ठीक है। ओके, मोबाइल घुमा रहा था, जगह से खड़ा हुआ था, है ना? ठीक है, मैंने सोचा अभी सामने सीधा बैठा था, अब शीर्षासन कैसे करने लगा आज। यहाँ पे है ना, कई बार नेटवर्क जाता है, हम पढ़ाते हैं ना, तो नहीं कई बार होता है नेटवर्क जाता है तो ऐसा ही होता है। पहले मैं जो यहाँ पे वीडियो दिखता है मैं उल्टा दिखता हूँ, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा उल्टा हो जाता है। तो समझो ऐसा हो गया, मतलब अब नेटवर्क गया। राइट डाउन क्वेश्चन, ट्राइसेक्शन का एक सम करते हैं, राइट? देन आई विल शो अनदर कॉन्सेप्ट जो होमवर्क में दिया था, सेकंड वन वही है। राइट डाउन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points of trisection, coordinates of the points of trisection of line segment joining 4 minus 1 and minus 2 minus 3. 4 minus 1 and minus 2 minus 3. Right? Points are not given, so we will take standard line segment AB and points A or B. Draw one line segment AB. Four minus 1. Value of B is minus 2. 4 minus 1 minus 2 minus 3. Right? Now what we will do, we will take 2 points which are on the segment. Suppose this is 1 point is B. Point is B, coordinates XY और PB के बीच में यहाँ लेंगे point Q, coordinates X dash Y dash. ले लो ये, चलो। AB is the line segment. Take 2 points P and Q. बराबर है? ऐतराज? लिख दिया? साथ में करना है ये सम, ओके। P and Q are the 2 points. Now we will write this explanation और sum शुरू करेंगे. Write down. Suppose A 4 minus 1 and B minus 2 minus 3. A 4 minus 1, B minus 2 minus 3 are the endpoints, are the 2 endpoints of segment AB. अब वो है
x1 y1 x2 y2 वो है, right? So below it here write down x1 y1, b के जो पॉइंट है उसके नीचे लिख दो x2 y2, लिख तो दिया लेकिन अब वो मेंशन करेंगे. So next line you write, that is suppose a4 minus 1 is equal to x1 y1. Next line b minus 2 minus 3 is x2 y2. A and B बने x1 y1 x2 y2. These are the points. P और Q इस सेगमेंट पे है तो वो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में. Suppose Pxy and Q x dash y dash दो पॉइंट है, सेगमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. So Pxy Q x dash y dash are the points of trisection. तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट, so are the points of trisection. लिख दिया यहां तक. Now we will get P. रेशियो पता चलेगा. So रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, रेशियो AP ऊपर लिखो m equal to 1, PD n equal to 2. ये है रेशियो m और n. AP m equal to 1, PB n equal to 2. ठीक है. Before section formula we will write by section formula लिखो चलो Px1 is mx2 nx1 n plus n my2 ny1 n plus n. ठीक है, ये लिखी हमने सेक्शन फॉर्मूला. बस then you put values x1 x2 y1 y2 values we know, m और n की वैल्यू है. हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन. शरण हो गया. -2 plus 8 upon 3 -3 -2 upon 3 -2 plus 8 6 by 3 xy 6 by 3 ये बनेगा 2. तो -5 by 3 फ्रैक्शन नहीं आता, चेक करो. आता है ऐसा शरण? ओके गुड. ठीक है, बना यहाँ पे Pxy. So what? कहीं जाए से कोई बोलो.
सो ये थी फिगर p x y, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए विद दिस 3 and 2/5 कौन सा -5/3 करेक्ट है ने बगासा नहीं खावाना है के रुद्रा चा पीन बेस जेवुं होय तो अने बपोरे बो भात ना खातो नहीं तो है ने नहीं तो बगासा बो आवशे p x y. Now what we will do, we will remove this portion. देखो निकल गया, so अब क्या रह गया q. So q is the midpoint of pb. So now we have coordinates p और b. But formula change हो जाएगी, समझो फॉर्मूला क्या बनेगी q x dash y dash. Midpoint formula we are using. Midpoint formula means q x dash y dash is equal to coordinate x. This is x2. Right? समझ लेना. Once again check करो. Formula क्या बनेगी q x dash y dash है midpoint formula. p का coordinate है x. Coordinate of d is x2 upon 2. Same way y plus y2 upon 2 ये बनेगी formula. चलो लिखो q x dash y dash q x dash y dash is a midpoint of p x y and b x2 y2. We will use midpoint formula now. So before this we will mention therefore by midpoint formula formula लिखेंगे हम x dash y dash is equal to लिख दो वाईफाई छूट बंद हुआ है शायद यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू है connected q x dash y dash is equal to x plus x2 upon 2 y plus y2 upon 2 वैल्यूज रखो हो जाएगा ये x plus x2 x की वैल्यू आगे आ गई है x2 x is 2 x2 की वैल्यू है -2 2 plus -2 upon 2 y की वैल्यू आई है 5/3 है ना -5/3 plus y2 -3 minus 5/3 minus 3 upon 2 तो 2 minus 2 ये तो 0 हो जाएगा but check the second simplification है ना plus -3 so it is -3 we take LCM 3 into 3 9 9 and 5 14 so it is -14 upon 3 into 2 6 और फिर थोड़ा बहुत कटिंग हो जाएगा 14/6 we can cut 7 और 3 से so answer is 0 minus 7/3 ये बना
one similar example. Find point of trisection. Find point of trisection of line segment joining 3 minus 4 and 1 2. 3 minus 4 1 comma 2. करो. Points we can take P x1 point Q x dash y dash. फिगर में ही नीचे x1 y1 x2 y2 लिख दो. x1 y1 other side x2 y2. x1 y1, this point B is x2 y2. Then use section formula for figure explain करो. Point of trisection, so one ratio we will take as n. The other ratio this side is n. N is 1, value of n is 2. Correct? Get the answer, the speed of clock.
Done. Section formula. Well, first I want coordinates of point P, X, Y. चलो प्रियांशु point P, X, Y coordinates बोलो. Step बोलो एक काम करो. Yes, sir. P x y equal to 1 Yes. 1 into 1 plus 2 into 3 upon 1 plus 2, Okay. comma 1 into 2 1 into 2. plus 2 into minus 4 2 into minus 4 upon 1 plus 2. upon 1 plus 2. Fine. बोलो next step. 1 plus 6 बोलो प्रियांशु next step. 1 plus 6 upon 3 2 minus 8 upon 3. Correct. Right. So answer is 7 upon 3 and minus 2. 7 by 6 and Minus 2. yeah, good. Fine. ठीक है, fine, बंद करो. Check कर लो point P, X, Y 7 by 3 and minus 2. Now next step Q. So you will use midpoint formula. Midpoint formula. Use करो. चलो. स्वानंदिता बोलो मिड फॉर्मूला. Sir, Q x dash y dash equals to Okay. x plus x2 upon 2 y plus y2 upon 2. Okay. Fine. Next step Then बोलो. yes sir, 7 upon 3 plus plus minus 2 upon 2. Okay. Next is Then minus 2 plus minus 3 upon 2. okay. Fine. Okay sir. Then LCM ले लिया. Final answer हो गया आगे. No sir, कर रही हूँ. Okay. कर लो.
कैल्शियम ले लिया होगा, काफी सारे हाथ ऊपर हो गए। रुचिता सिंह, माइक ऑन करो। सर वो Y2 आपने -3 लिखा है बट वहां पे 2 आएगा। अच्छा, दिस वाला, ये हाँ ठीक है, राइट। सो दिस गोes here 3 into 2 -6, 7 - 6 1, तो आंसर इज 1/2 और 0, बराबर है। ठीक है रुचिता, देख लेना। माइक बंद कर दिया रुचिता ने जानबूझ के, घर की आवाज बहुत है, बाहर चली जाए यस इससे अच्छा सर माइक। नहीं अच्छा ठीक है ओके, चलो और एक दो समझ लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में दो तीन सम्स आपको लिखा था एक जैसे, राइट, बट थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, कर लेते हैं। चलो write down, in what ratio does x-axis divide line segment joining points 2, -3 and 5, 6. Correct? 5, 6 means 5, 6. Also find coordinates of point of intersection. थ्री फोर्थ पेज छोड़ दो, पूरा पेज नहीं, आधे से थोड़ा ज्यादा। कुछ बच्चे बहुत उदार हैं, पूरा पेज छोड़ देते हैं। चलो नेक्स्ट वन, in what ratio does y-axis divide line segment joining points P -4, 5 and Q in bracket 3, -7. Also find point of intersection. Next one, again 3/4 page. If point C -1, 2 divides line segment joining point A 2, 5 point A in bracket 2, 5 and point B in the ratio 3:4. Find coordinates of B.
नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी 3/4 पेज छोड़ देना. Determine the ratio in which line 3x plus y minus 9 equal to 0. 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the line segment joining points 1, 3 and 2, 7. Right? 3-4 सम से एक जैसे गुड एग्जांपल्स समझ रहेगा. चलो, जैनिश सुथार, read first question. जैनिश. Yeah, करो भाई. Sir, first one, in first what ratio does x-axis divide lines segment joining 2, -3 and 5, 6? 2, -3 and 5, 6. 5, 6, right? Okay. In what ratio x-axis divides, right? X-axis दिया. So what we do? We take 2 points A and B. बीच में है point P, but P is on x-axis, right? Remember, point is on x-axis. तो x-axis है तो क्या होगा? Y की वैल्यू हो जाएगी 0. So coordinates are x, 0. Correct? We write this coordinates. यहाँ पे लिखेंगे x1, y1. यहाँ पे लिखेंगे x2, y2. बस. Now we will use section formula. So देख लो by section formula. In what ratio? We want ratio. So हम क्या करेंगे? AB की वैल्यू जो है that is n. BC की वैल्यू आएगी, second ratio is n. So now we use section formula. Px और 0 हमने लिया है, but actually we take xy formula में. लिखना नहीं है अभी बीच में, हाँ देखते रहना. So section formula use करेंगे. After explanation, Pxy is mx2, that is n into x2 plus n x1 नीचे आएगा n plus n. Same way, section formula my2, so that is n into 6 plus n into y1, which is -3. नीचे आएगा n plus n. Correct? Section formula use करी. Pxy की वैल्यू हमें पता है. Pxy means Px0. So we make it Px0 is equal to this formula, this expansion 5n plus 2n. नीचे आएगा n plus n. Second expression is 6n minus 3n. नीचे आएगा n plus n. Correct?
अब देखो, जहां पे कल मैंने कहा था 0 हो तो उसे ही कंपेयर करना, ठीक है ना? मन में लड्डू फूटा, बस तो लड्डू पहले यूज कर दो। सो व्हाट वी विल डू, 0 यहाँ पीछे है, सो 0 वाली टर्म जो है दैट इज y कोऑर्डिनेट, इसको यहाँ इससे कंपेयर करेंगे। यही है एडवांटेज, राइट? x एक्सिस y एक्सिस इसीलिए देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई 0 आए, जैसे 0 आएगा हम कंपेयर कर सकते थे। सो 0 वाली टर्म ये रही, 0 वाली यहाँ पे है ना, देख के मन में याद होना चाहिए क्या, मन में लड्डू फूटा, राइट? तो लड्डू यूज करो पहले। सो वी विल कंपेयर दिस, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन 0 is equal to 6n minus 3n upon n plus n. Now simplification n plus n यहाँ जाएगा तो वो बन जाएगा पूरा 0. So next step is 0 is 6n minus 3n. Correct. Now we change side. 6m minus 3n. 6m यहाँ ले लो suppose. So minus 6n is minus 3n. दोनों साइड माइनस माइनस कट, सो 6n इक्वल टू 3n एंड द इंपॉर्टेंट स्टेप, ऐसे ये पीछे वाले स्टेप डायरेक्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ कर लेते हैं कई बार। सो वी विल चेंज साइड्स, सो m अपॉन n, ठीक है, ये n नीचे आ रहा है, दिस इज 3/6, सो आंसर आ गया n is to n 1 is to 2. So here is first value which is ratio. Correct? Question में दो values निकाल लिया, ratio in which x axis divides. पता चला यहाँ तक क्या किया, x axis है क्वेश्चन में, तो x axis जैसे ही लिया हमने कोऑर्डिनेट्स लिया, एक x दूसरा लिया 0. y axis होता तो कोऑर्डिनेट हम लेंगे 0 और दूसरा y. करेक्ट? और फिर सिंप्लीफाई हो जाता। नाउ x 0 लेके किया, सिंप्लीफाई किया, m अपॉन n 1 is to 2, तो यहां तक एक काम खत्म हुआ। नाउ वी वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स आल्सो, तो कोऑर्डिनेट्स ये रहे, राइट? कोऑर्डिनेट्स ये है p x 0, ये है कोऑर्डिनेट्स, एक तो 0 है, अब हम दूसरा x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना? पता चलता है विधि तूरी અહીં જોજે બાપા, इंपॉर्टेंट वस्तु છે, बीच में अपनी चोटली ना पकड़ता। यहाँ जो x की कोऑर्डिनेट ये रहा, अब हम इससे कंपेयर करेंगे, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, m और n की वैल्यू आ गई हमें। सो यहां से मैं यहां करता हूं साइड पे, ठीक है, x फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट, दैट इज 5n प्लस 2n, नीचे आएगा m प्लस n. नाउ x इज इक्वल टू 5 इंटू n, m की वैल्यू आई हो ये रहा, करेक्ट? m इज 1, n की वैल्यू 2, सो 5 m इज 1 प्लस 2, n की वैल्यू 2, नीचे n प्लस n 1 प्लस 2, तो x कोऑर्डिनेट होगा 5 into 1 5, 2 2s are 4 upon 3, 5 and 4 9/3, this becomes 3. करेक्ट? पता चला क्या हुआ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करी, 0 वाली टर्म पहले कंपेयर करेंगे तो आधी वैल्यू निकल जाएगी, सीधा आंसर आएगा। 0 से रेशियो आ गया n is to n। नाउ x का दूसरा कोऑर्डिनेट कंपेयर किया, x का ये है वैल्यू, सो x इक्वल टू दिस, m और n की वैल्यू रखी और x इक्वल टू 3 आ गया, एंड नाउ वी राइट फाइनल आंसर, राइट? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए x, 0, x की वैल्यू 3, y इज 0, ये बना दूसरा आंसर, करेक्ट? So these are the two answers. समझ लेना परफेक्टली। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है, ध्वनि जादव, माइक ऑन करो ध्वनि। Yes, sir. ध्वनि, read second question.
In what ratio does y-axis divide the line segment joining? सर मेरे पॉइंट्स छूट गए थे लिखने. ओके चलेगा, राइट, करना नहीं, चाल से जवा देते है ना. ओके, सी point P on y-axis coordinates are 0, y. You will use section formula, right? तो section formula के बाद इस तरह आएगा is equal to n और n वाला टर्म, करेक्ट. अब यहाँ क्या है, पहले 0 ये रहा, 0 कहाँ पे है, x की टर्म में. So what you will do, x वाली टर्म जो है वो कंपेयर करेंगे 0 वाली टर्म, राइट. जैसे लड्डू देखा, यूज करो, खा लो, तो 0 से आ जाएगा रेशियो m:n. m:n सपोज आया 2:3, तो y का कोऑर्डिनेट है वहां रखना है 2:3, तो y आ जाएगा. ठीक है दिव्यांशु, माइक ऑन करो. यस सर. इसमें आगे और पीछे के कोऑर्डिनेट्स बोलो. x के आगे क्या पॉइंट? -4 and 5 and 3 and -7. ठीक है ध्वनि, करीना की जॉब है. हो जाएंगे दोनों सम्स एक जैसे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको करने हैं. चल स्टार्ट. क्रुविश, माइक ऑन करो. क्रुविश पटेल. यस सर. क्रुविश हो गया, ये आंसर आ गया? नहीं सर बाकी. ओके फिनिश कर पास. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है. हाँ थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं. एक्चुअल वर्ड इज एनलार्ज, बट कई लोग एनलार्ज बोलते हैं. मजा आता है नया नया सुनने में. होगा आई थिंक. क्रुविश डन. यस सर. ओके चल रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. सर थर्ड क्वेश्चन से छूट गया. क्या हुआ? सर थर्ड क्वेश्चन छूट गया. अच्छा कैसे छूट गया? पकड़ा नहीं था ठीक से? वो पानी पीने. अच्छा कोई बात नहीं. जो तूने कहा ना छूट गया, तो बाजू के विंडो में यहाँ पे एक में दिव्यांशु है, एक में मोहम्मद साहब, दोनों बैठे बैठे हंसते हैं. मेरे स्क्रीन पे एक साथ 4 व्यू आएंगे, एक मेरा वीडियो होगा, बाकी सब 3. ठीक है चल. उर्वी केला, माइक ऑन करो. यस सर. उर्वी रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. If point C -1 to by line segment joining point A, 2y and point B in the ratio 3:4, find coordinates of P. ठीक है राइट, we'll do together. चलो once again draw a segment. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं, राइट. सिंपल है, फंडामेंटल में किया है इसे. फर्स्ट पॉइंट बोलो उर्वी, यहाँ पे क्या है फर्स्ट पॉइंट? C -1 2. ओके -1 2.
Second point. A to Y. 2Y. Okay. Ratio 3:4. ठीक है, रेशियो दिया है 3:4. पृथ्वी पटेल, माइक ऑन करो पृथ्वी. Yes, sir. Read question again. Yes, sir. If point P minus 1, 2 divides line segment joining point A 2, 5 and B in the ratio 3:4, find coordinate of B. Two coordinates दिया है A and B. C divides it in the ratio. ठीक है. A के coordinates को point A is here 2, 5. 2, 5. दूसरा end point यहाँ पे है. Coordinates of point B. B बोलो. In the ratio 3:4. C minus 1, 2. Point C minus 1, 2 divides A 2, 5 and B in the ratio. B के coordinates नहीं दिए तो we take x2, y2, right? In between there is point C. Ratio coordinates are minus 1, 2. Divide in the ratio 3:4. Find coordinates of B. ये निकालना है, करेक्ट. सेम है सेक्शन फॉर्मूला ही, बट क्या है सेक्शन में वो वैल्यू निकालनी है. चलो साथ में करते हैं. फिगर ड्रॉ करो. टॉपिक के रिलेटेड में सब सम्स कराता हुआ. टेक्सचुअल भी है, आरडी शर्मा के भी हम कर रहे हैं साथ में, और फिर उसके रिलेटेड जो दिखेंगे थोड़े बहुत दे दूंगा होमवर्क. Below this point C है बीच में, तो नीचे लिख लो xy. A के नीचे लिखो x1, y1. This is already given x2, y2. Right? Section formula use करेंगे. चलो डायरेक्ट section formula. C xy is equal to n, which is 3 into x2 plus n into x1 upon n plus n. Section formula use करिए. Same way, second one, n y2. n is 3. y2 ही है, plus n is 4. y1 is 5. n plus n. 3 plus 4. नेक्स्ट स्टेप करेंगे therefore C xy. C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 2. We will simplify them. 3x2 plus 8 upon 7. This is 3y2 plus 20 upon 7. राइट. मन में लड्डू फूटा क्या? हाँ, लड्डू है ही नहीं. लड्डू नहीं है, जीरो नहीं है, करेक्ट. जीरो है तो जीरो यूज करेंगे. नाउ सी, जीरो नहीं है क्यों? क्योंकि x और y अलग अलग टर्म में है. पहले में x है तो x को कंपेयर करेंगे फर्स्ट वन -1 से. y2 इज इन सेकंड तो उसको 2 से कंपेयर करेंगे. सो नाउ वी कंपेयर. लिखो नीचे by comparing coordinates.
कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देंगे, वी गेट बस फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -1, सो -1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8/7, दूसरा आएगा 2 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20/7. सिंप्लीफाई करो, you will get two values x2 and y2. रुचिता सिंह, गलती से हाथ ऊपर हो गया। यस सर। अच्छा, गलती से हो गया था, वेरी गुड। So now we simplify, है ना, 7 goes here, तो -7, 8 वहां आएगा, -7 -8 -15, 3x2, 3 goes down, 3 5 are 15. This way 7 into 2 14, so we get this 14, 20 आ जाएगा, -20 is 3y2, 14 minus 20, -6 is 3y2, y2 -6/3 is -2. Check करो, these are the values. x2 की वैल्यू -5, y2 की वैल्यू -2. ठीक है, चल और एक करते हैं, नेक्स्ट वन। लिखा दिया है ना, और एक बाकी है आई थिंक। चलो, प्राची पटेल। Yes, sir. Read question, next one. Determine the ratio in which line 3x plus y minus 9 is equals to 0 divides the line segment joining points 1, 3 and 2, 7. समझो क्वेश्चन क्या है। This is the line segment joining point 1, 3, 2, 7. अब यहाँ पे कोई एक लाइन है, right? Name of that line or equation of line is given, और वो लाइन उसको कोई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। We have to find coordinates of point of intersection. प्राची, लाइन का नेम बोलो, इक्वेशन दिया है वो 3x. Yes, sir. 3x plus 3x plus y minus 9 is equals to 0. ओके, समझ लेना, गुड क्वेश्चन। स्नेहा, लिखने की जल्दी नहीं रख। यहां देखो, सपोज पॉइंट A 1, 3, B 2, 7 are the end points of the segment. Line 3x plus y minus 9 equal to 0 divides line segment at point C. P ले लेते standard बीच में. This is point P. Coordinates are x and y. P के coordinates दिए हैं? नहीं दिए. And now we take the ratio AP. So this ratio, this value is n. PD is n. पहले फिगर ड्रॉ करो, चलो। ये जो है बुक में नहीं है ऐसा, बट एडिशनल ऑब्जेक्टिव्स करते हैं ना एग्जाम से पहले पहले, जब ऑब्जेक्टिव पोर्शन शुरू होगा उसमें ये बहुत आता है। और यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट रुक जाते हैं लाइन वाले इस तरह के शब्द। Write down. Suppose
line 3x plus y minus 9 equal to 0, 3x plus y minus 9 equal to 0 divides line segment A in bracket 1 comma 3 and B in bracket 2 comma 7. लाइन सेगमेंट ने लाइन सेगमेंट के बाद एक वर्ड ऐड करो, लाइन 3x plus y minus 9 equal to 0 divides line segment formed by word ऐड करो, formed by A 1 3 and B 2 7 in the ratio n is to n. In the ratio n is to n. Next line, point P in bracket x comma y is the point of intersection. x1 y1 x2 y2 भी लिख लो with A and B, x1 y1 x2 y2. Now we will use section formula. We will get coordinates of P. So write down bisection formula. Bisection formula P x comma y, right? Use karo is equal to mx2 plus nx1 upon n plus n, my2 plus ny1 upon m plus n, ये बनेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप लिखा है। Got it? P, X, Y, M और N वाले पॉइंट्स बने। Now, remember, important step. This point P, X, Y is also a point on the line. समझो, ये P, X, Y यहाँ पे है, correct? This point P, X, Y यहाँ पे भी है. That means it satisfies, it is on the line. So line में x और y की जगह हम ये लिखेंगे, correct? Right, next line. Also point P x y, write down point P x y is on the line. P x y is on the line 3x plus y minus 9 equal to 0. Right, next line. Therefore, by putting values of x and y, we get by putting values of x and y. समझो अब क्या करते हैं हम? ये रहा x, x की जगह हम लिखेंगे ये 2m plus n वाला, right? तो ये इक्वेशन है, x की जगह आ जाएगा ये 2m plus n, n plus n. Got it? Plus y. So y की जगह ये आ जाएगा 7n minus 9 equal to 0. चलो रखो वैल्यू. X in place of x we put 2m plus n, m plus n. Value of y is 7n plus 3n upon n plus n. And then you simplify. Simplification means now
you will take LCM. M plus n is the LCM, so it will go with -9. साथ में remove कर दो bracket. So 3 2m plus n plus 7n plus 3n minus 9n plus n is equal to 0. Got it? M plus n is the LCM, single number. पास कर दिया बस. अब ले लो ब्रैकेट रिमूव करो. You will get ratio m is to n. So 6n and 7n, 13n, 13n से 9 माइनस कर दिया. 4n, same way n, 3n and 3n, 6n minus 9, 6 minus 9 minus 3n equal to 0. Correct? Now what? Minus 3n goes the other side. So we get 4n is equal to 3n. We want ratio m upon n. तो ये n नीचे आएगा. m के नीचे n. 4 goes this side. 3/4. Or we can say n is to n is 3:4. n is to n 3:4. Okay? ये बना आंसर. Got it? विधि हो गया? Okay, fine. होमवर्क लिखो. एसएस में सर टेस्ट रखने वाले हैं संडे. आज आपको बताएंगे. आज कैसे परम है ना. बदले तीर्थ. होमवर्क टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5. बस एक ही सम चलेगा. ठीक है. आओ जो. बाय बाय. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद सर. आओ जो. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद सर. जय हिंद. आओ जो.